శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాల్సింది. నేను చెప్పిన విధంగా అందరూ తిరిగి చెప్పగలను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిదయే నిదయేర్తినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతయే. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శతాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్యసన్నిధౌ అస్మిన్ దేశే వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాగాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా మీకు గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం, ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే. సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. हरि ओम नमस्ते नमस्पतये नमस्तकीनां पुरोगानां चक्षुषे
नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रथमां मे गोपागा हे सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावदक्कुरु सर्वमागरुपासतां श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीमते विकनसे नमः भृगुमरीचत्रियस्यवेभ्यो नमः इदं ब्रह्म पुणीमहे ब्रह्मा पुनातो निरुपमगुणसिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिलनगवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः रजचरणसमर्थासक्तभक्तौ करक्षीण सुकृतगे मे स्वाङ्घ्रिभक्तिं विदन्वन् शुक्लां भद्रं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्गरेकं स्मरामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुमन्यतां प्राणानागम्याम् अस्यां श्रुतो श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्याश्रयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्गलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिलीलासमेत श्रीश्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकाण्ठभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योगकर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गम् उपासनाग्नौ आघारकर्माङ्गं माङ्गल्यर्णकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावादनं करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये पदङ्गं करकाराधनं करिष्ये ओं धाराउ सप्त सुसमानशेषो सारत्सारित्सु परिपूर्णतेषो अपोपगनं मृदवाश्रेणोत्तागं सर्वगं धर्म हितमापस्यवा श्रुतमा शान्ता शान्ततमा शुभा श्रुतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यश्च रश्मिः ओं ये ते श्रुतं वरुणगे सहस्रं विज्ञापाशाविताः पुरुत्रा ते विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्द्रमृतसत्यां तरके पाञ्चभुजकमवाहयामि जले वरुणमवाहयामि प्रदेशमवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि गणस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गृहोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनस्पृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मान्नुपासीता कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां समाप्य कुर्यात् परिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं होमाग्नेयोगस्मादुजामहेत्ता विश्वे सदात्तं महितोऽनुशम्भो विरजन्ते सुनिदत्तां प्रैषामधीशोदानामनादिः यामे जस्तां दरितां ददातो पद्माकरमण्डले त्वं शक्तिरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानवायनमवाहयामि तत्पत्नीं सौतवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शिक्षक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि जातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाचतां सुपुण्याहं करोमि करोष्व कुसितप्रोक्षितम् अस्तो प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतकः शवानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतकः शवानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदे पदं समूढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो वदानि वस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सगा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासाविपण्यवोजाग्रवाकं वस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षरुजत्राः स्त्रीरङ्गैः सुष्ठुवागं तस्तनोभिर्वशेम देवगितं यदायुः
हृतविन्नसरदो अन्तिदेवायत्रानश्चक्राजरसं तनूना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिषता गर्गन्तोः अदित्योऽन्तरिक्षमदिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अतिपञ्चजनामतित्तं यत्पुण्यं नक्षत्रुर्वेदविषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रन्नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्यः यः कुरुते प्राणानागम्य अस्यां भवतो श्रीनिवासः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् पुण्याकर्णे पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रस्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्णेव स्फुरतु प्राणानागम्य अस्यां शोभतो श्रीनिवासः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् पुण्याकर्णे पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्महव्यै नमसो मसद्य मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् विषावर्धगन्तः तदञ्जीव्यमसवीराः प्राणानागम्य अस्यां भूतो श्रीनिवासः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टां गाभवस्थानवोर्जेधातना आपो जनगता जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रनिदर्शनिः यः पोता स पुनात्मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तमनवो धियां पुनन्त विश्व आगमः चतवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतीत्यत् अग्ने कृत्वा क्रतो गुम्भृणो यत्ते पवित्रमक्षिषे अग्नेविदमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति दैव्याघात् यस्यै बक्वीस्तनवो वीतपुष्टाः तयावदन्तसमाद्येषु वयज्ञस्यामदगौरगीनां वैश्वणरो सविर्मापनातो वातप्राणेने शिरोमगो भूः ध्यावा प्रतिवेपकसापयोभिः कृतावनी यज्ञे मापणीतां बृहद्भिः सविदस्त्रुभिः वरजिष्टैर्देवोन्नभिः आग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपनता येनापो दिव्यङ्गदः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरद्येति पृथिभिः सम्प्रदकं वसं सर्वगं सपूतमश्नाति सवितं मातरिष्वणा पवमानीर्यो अद्येति ऋषिभिः सम्प्रदकं वसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पवमानी स्वस्यगनी कुतगाही पयस्वती ऋषिभिः सम्मृतोर्जः ब्राह्मणे समृतकं मिदं पवमानीर्दिशन्तनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्दगन्तनः देवे देवैः समावृताः पवमाने स्वस्यगने त्वद्गाही कृतश्चितः ऋषिभिः सम्मृतोर्जः ब्राह्मणे समृतकं मिदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुरते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं तदोद्यामवं वीरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सगमा पुनातो सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमणाभिप्रातवां तदवेदामोर्जगञ्चापुनातो तच्छम्यो रावृणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपतके दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां देवार्पितो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमाशाः पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशिग्रहा प्रसवो मार्जगन्तामुदीच्यां देस्यापवोषतगो वनस्पतगो मार्जगन्तामूर्ध्वागां त्रियज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जगन्ताम् अधोतराधरैर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् ॐ अनोरणीयान् भगतो महीयानात्मा गुहागां निहितोऽस जन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रवन्ति तस्मात् सप्ताचिदः समिदः सप्त जिह्वान् सप्त इमे लोका यचरन्ति प्राणाकुहासगां निहिताः सप्त सप्त वरुणाकर्मः विश्वक्सेनाकर्मः पुनः पाद्यं पुनर्घ्यं पराचमणीयं सोत्पयामि यदा सुखं यथा स्थानं प्रतिष्ठापयामि स्वपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च।
இன்று யாம் பெறும் சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோல்வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பார்ச்சோறு மூட நெய்பெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய். ஆண்டாள் பிராட்டியின் இனிமையான பாசுரம். பக்தர்களே, ஆண்டாளுக்கு மிகவும் உகந்த நாமம் திருநாமம் கோவிந்தன். அதே போல கண்ணனுக்கும் உகந்த திருநாமம் கோவிந்தன் தானாம். தன்னை கோவிந்தா என்று அழைப்பதில்தான் கண்ணனுக்கு பெருமையாம். அந்த கோவிந்த நாமம் தானே இதோ நமது கலியுக தெய்வமாம் திருவேங்கடவனுக்கும் இந்த திருமலை எங்கும் ஒலிப்பதும் அந்த திருநாமம் தானே. அந்த கோவிந்தனின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிமார்களோடு நடைபெறும் திருக்கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து திவ்ய தம்பதிகளின் திருவருளை பெற பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ணசுவாமி. பக்தர்களே, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியம் இவை நிறைவுற்று இப்போது அஷ்டசக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியத்துக்கு வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஆண்டாள் பிராட்டி திருப்பாவையில் பாவை நோன்பு ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் தனது தோழிகளை எல்லாம் பார்த்து சொன்னது என்ன தெரியுமா? நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாமுடியோம் செய்யாதன செய்யோம் இவெல்லாம் சொன்னது. ஆனால் இந்த 27வது பாசுரத்தில் சூடகமே தோல்வலையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பார்ச்சோறு என்று அடுக்கிக் கொண்டே போவதை பார்த்து வியப்பாக இருக்கிறது அல்லவா? இதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா? தோழிகளை எழுப்பிக் கொண்டு கண்ணனின் மாளிகைக்கு வந்து நப்பின்னை பிராட்டியின் மூலம் கண்ணனையும் எழுப்பி அவன் இப்போது தனது சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து இவர்கள் வேண்டுதல்களெல்லாம் கேட்டுவிட்டு கேட்டதை தருவதாகவும் வாக்கு கொடுத்து விட்டானாம். இனி நோன்பு நிறைவேற வேண்டியதுதானே. ஆகவே இந்த பாசுரத்தில் நமக்கு கோவிந்தன் வேண்டியதை தந்துவிட்டான். இனி நாம் மகிழ்ச்சியாக கண்ணனுக்காக அலங்காரங்கள் செய்து கொண்டு எல்லோரும் சேர்ந்து கூடி அந்த அருளை கைங்கரிய பார்வோம் என்று அவள் சொல்கிறாளாம். அந்த கோவிந்தனின் இதோ திருக்கல்யாணமும் இதோ அப்படித்தானே. பக்தர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க நித்திய கல்யாண உற்சவம் கண்டு நம்மை எல்லாம் அனுகரிக்கிறார் அல்லவா? அவரது திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது நடைபெற இருப்பது ரக்ஷை பூஜை. பக்தர்களே, ஸ்ரீ வைகானச ஆகமப்படி சேஷாகிரமஹ புண்ணியபுஷ்பை பூஜயாமி சேஷாகிரமஹ गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम दस्तनो आममेतामस्विना भगस्वसि देवेतनो निर्वणः स्वस्ति पूषा सुरोदातन स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतुना स्वस्तगे वयोप्रवामहि सोमं वस्तिभुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं दुस्तगे स्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्यारुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अमुद्रुस्ते स्वस्तिनो रुद्रपात्तं हासः स्वस्तिमित्रा वरुणा स्वस्तिपद्ये रेवती स्वस्ति नगीन्द्रश्चाग्निस्वस्तिनोदिते कृति स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दताग्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तगनं तार्क्ष्यमरिष्ठणे महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहद्यसोणविवारुहेम होमुच माङ्गिरसङ्गकिञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चितार्क्षं प्रयतमानुशरणं प्रपद्ये संभादे शवयन्नो अस्तु शुभगं शुभम्. ஆகமப்படி நாகராஜனையே ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணும் கைங்கரியம் முடிந்தது. அடுத்து இதோ ரக்ஷாபந்தனத்துக்கு தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சக சுவாமி. நம்மை ரட்சிக்க வேண்டும் என்கிற சங்கல்பத்தோடு இதோ இந்த திருமலையில் வந்து நின்ற கோலத்தில் தரும் எம்பெருமானுக்கு எத்தனையோ திருக்கல்யாணங்கள் உண்டு. சுசீலம், சௌலபியம், வாத்சல்யம் இப்படி எத்தனையோ குணங்கள் இருந்தாலும் அவருடைய அந்த பாரபட்சமற்ற தன்மை இருக்கிறதே, அதுவே அனைத்திலும் உயர்ந்தது. அவருடைய அருள் பார்வைக்கு முன்னே ஜாதி மத பேதம் எதுவும் இல்லை. ஏழை பணக்காரர் வித்தியாசம் இல்லை. ஆண் பெண் மிருகங்கள் பறவைகள் என்று பாகுபாடு கூட இல்லை. ஏன் தேவர்கள் அசுரர்கள் என்று கூட அவர் பிரித்து பார்க்கவில்லையாம். அப்படி பார்த்திருந்தால் தேவர்களும் அசுரர்களும் சாவா மருந்தான அமிர்தத்தை வேண்டி பார்க்கடலை கடையும் போது இருவருக்கும் உபகாரமாக மந்தரமலையை தாங்க கூர்மாவதாரம் எடுத்திருப்பார்
கொண்டிருப்பாரா? ராமாவதாரத்தில் படுகோட்டி குகனையும் வானரத் தலைவனான சுக்ரீவனையும் அசுரகுலத்தில் பிறந்த விபீஷணனையும் பக்ஷிராஜனான அந்த ஜட்டாயுவையும் தன்னுடைய சகோதரர்களாக கொண்டிருப்பாரா? அதே போல கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பாண்டுபுத்திரனான அரசகுமாரன் அர்ஜுனனையும் பரம ஏழையான பால்யகால சிநேகிதனான சுதாமா என்கிற குச்சேலனையும் சமமாக பார்த்திருப்பாரா? ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் கூட வரலாம். சரி, பாரபட்சமற்ற எம்பெருமான் அசுரர்களை மட்டும் சம்ஹாரம் ஏன் செய்தார்? சர்வகுணசீலனான எம்பெருமானின் சங்கல்பம் என்ன? தன்னிடம் சரணம் என்று வருகிற அந்த பக்த ஜனங்களை ரட்சிப்பது. சகல பலம் படைத்த சக்திசாலிகள் தாங்கள்தான் என்கிற ஆணவத்தோடு இந்த அசுரர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? கடுமையான தவங்கள் செய்து தாங்கள் பெற்ற வரங்களின் மூலமாக சாது ஜனங்களை கொடூரமாக இம்சிக்கிறார்கள். ஆகவேதான் அப்படி இருக்கும்போது அந்த அசுரர்களை எம்பெருமான் தண்டிப்பது அவசியம்தானே? தனக்கு மனிதனாலும் விலங்கினாலும் தேவர்களாலும் மும்மூர்த்திகளாலும் மரணம் வரக்கூடாது என்ற வரத்தை பெற்ற ஹிரண்யகசிப்பு ஆணவத்தோடு ரிஷிகளையும் தேவர்களையும் தேவதைகளையும் தனக்கு அடிமையாக்கியது அல்லாமல் ஸ்ரீமன் நாராயண மந்திரத்தை ஜபித்து வந்த தன் குமாரன் பிரகல்லாதனையும் எப்படி இம்சித்தான்? அந்த அசுர குழந்தைக்காக அவன் வாக்கினை மெய்ப்பிக்க வேண்டி எம்பெருமான் நரனும் சிங்கமும் ஓர் உருவாகி நரசிங்கமாக தூணை பிளந்து வந்து ஹிரண்யகசிபுவை எத்தகைய ஆயுதங்களும் இல்லாமல் கூரிய நகங்களால் கிழித்து கொண்டார். பக்தர்களே, அகோபில வாசனான அந்த நரசிம்மனே இந்த கலியுகத்தில் வெங்கட நரசிம்மன். அவரது சங்கல்பத்தை நினைவுபடுத்த அவருக்கு ரட்சையை சமர்ப்பித்துவிட்டு இப்போது பிரார்த்திமார்களிடம் வந்துள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. நாம் எம்பெருமானுக்கு செய்கிற எல்லா உபச்சாரங்களும் பிரார்த்திமார்களுக்கும் செய்ய வேண்டுமல்லவா? முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயார் அகிலகில்லே நிறையவென்று அலர்மேல் மங்கை தாயாராக எம்பெருமானின் வக்ஷஸ்தலத்தில் கணம் கூட பிரியாமல் இருப்பவள் யார்? ஸ்ரீதேவி தாயார். அவளுக்கு முதலில் மானசீக பூஜைகள் செய்து இதோ இப்போது அவளுக்கு ரட்சையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி வல்லப கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டு அவளது மணாளனான அந்த கோவிந்தனை நாம் அடையலாம். அடுத்து அருகில் இருப்பவள் யார்? பூமி பிராட்டி. பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் என்றது பெரியோர் வாக்கு. அத்தகைய க்ஷமாதேவி அவள். அந்த ஸ்வேத வராக மகிழ்ச்சியான அவளுக்கும் இதோ இப்போது உபச்சாரங்களை செய்துவிட்டு அந்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, இந்த பூமி தேவியையும் முன்னிட்டு கொண்டு நாம் அவளது மணாளனான கோவிந்தனை சரணமடையலாம். அடுத்து இன்றைய திருக்கல்யாண உற்சவத்தை நமக்காக நடத்தி கொடுக்கின்றாரே அர்ச்சக சுவாமி, அவருக்கும் எந்த தடைகளும் வராமல் இருக்க, விக்னங்கள் வராமல் இருக்க, மந்திரலோபம், கிரியாலோபம், ஸ்ரத்தாலோபம் எதுவும் வராமல் இருக்க, அதோ இன்னொரு சுவாமி அவருக்கும் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை இதோ கட்ட ரக்ஷாபந்தனம் இனிதே முடிவருகிறது. எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு இப்போது வர உள்ளோம். அது அக்னி பிரதிஷ்டை. அதை தொடர்ந்தாற்போல் ஹோம காரியங்கள். யக்ஞ புருஷனான எம்பெருமானை முன்னிட்டு கொண்டு பண்ணப்படும் அந்த ஹோம காரியங்களை இப்போது நாம் தரிசிக்க உள்ளோம். பக்தர்களே, மந்திரங்களை காது குளிர கேட்போம். औपासनाग्नौ आधारं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैर्धैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वान् नमत्तो इन्द्रः शुद्धो न आदिः शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धोरयं विधारिया शुद्धो मध्यः सौम्यः मयि देवाद्युणमागजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः देव्या होतारन्तपूर्वेष्टास्याम तनुवा सुवीराः उद्दन्यमानमस्य अमेद्यं उपपाप्मानुजमानस्सगन्तो शिवानुषन्नो माता पृथिवी तोकसाता तत्सुदर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सन्दले भूमिमवाहयामि रेखायां स्कन्दमवाहयामि धरणे पितॄणावाहयामि घृतप्रत्येकगतया निरग्नेर्घृतैः समिद्धोगतमस्यान्नं घृतप्रहस्तादगतो वहन्ते कथं पिबन् सिगदायक्षिदेवान्
अवितिरमुञ्जस्व मुदिरमुञ्जस्व स्वस्तिरमुञ्जस्व देवसवितप्रसुवा तत्सदर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तावुजीमतस्तरुचोभेन आवह स बुद्ध्यापमास्य विष्टादश्च वः ॐ ब्रह्माणमवाहयामि प्रजातिमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातो ओं सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाग्रमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धगत्तन्नाकस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमादाय पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञे एस्तो वायुपूतेस्तो विष्णोर्मनसा पूतेस्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णामृतन्त्वास्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि ॐ विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि सदाविष्णुमवाहयामि व्यापिनामवाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्वा पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वा गृह्णात् स वा गृह्णातु ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि यजमानवाचं गच्छ सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं गच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्धगत्तन्नाकस्य पृष्ठेजमानो वस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणग पापो देवी कंसाधिकन्तनः सम्मिषन्तां दृढपात्रान् देवगज्जागैः दक्षिणप्रणदो ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजामवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि यज्ञमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसूनवाहयामि मृतमवाहयामि रुद्राणवाहयामि अपौपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि सोमवाहयामि औपासनिक विश्वान् देवान् सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे ॐ ब्रह्मणेष्णुरूपामि इन्द्रायष्णुरूपामि वसुभ्योष्णुरूपामि मरुद्भ्योष्णुरूपामि रुद्रेभ्योष्णुरूपामि अपवुपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णुरूपामि प्रस्तेष्णुरूपामि मित्रायुष्णुरूपामि वरुणायुष्णुरूपामि आदित्येभ्योष्णुरूपामि असभ्यां विष्णुरूपामि पूष्णेष्णुरूपामि कक्षायुष्णुरूपामि कक्षे सोमायुष्णुरूपामि औपासज्ञायुष्णुरूपामि स्वेभ्यो देवेभ्यो स्वदेवेभ्यो विष्णुरूपामि आज्यं त्रिपदश्रयामि चिरं त्रिपदश्रयामि आग्ने ज्योतिरसि समदस्यमिद स्वाहा अमृतमसि वार्तमसि अन्ततकं भक्षान्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः कृपयस्वापणात् पच्छिद्देन भवितेन वसो सूर्यस्य तस्य विस्वाहा वाक्पदस्तापणात् पच्छिद्देन भवितेन वसो सूर्यस्य तस्य विस्वाहा देवस्तासेवितापणात् पच्छिद्देन भवितेन वसो सूर्यस्य तस्य विस्वाहा करसम्पूर्णवासमिदो गृहीत्वा मूलाघ्राभ्याङ्गदग्रस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्य अक्षताम् आज्य चिरुभिः इमामे अग्निष्टका धेनवः सन्तु इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः उतवहाय नमः सहस्रे नमः कृष्णवत्रे नमः यज्ञपुरुषाय नमः अदितिरमुञ्जस्व स्वस्तिरमुञ्जस्व देवसवितप्रसुवा ॐ अजन्तगित्म आत्मजवेदस्तेनेभ्यः समर्दस्व हेद्दवद्दगतास्मान् मृदगा वसुविर्ब्रह्म भवत्सेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा वायुव्याधाग्नेय अन्तं प्रजापतये स्वाहा तदित्यादिशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यः स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा आपावुपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा सुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा सोमाय स्वाहा औपासनिज्ञाय स्वेभ्यो देवेभ्यो सदेवेभ्यः स्वाहा
ద్రవ్యాభిఘార్య చిరం సావిత్ర్యా గృహీత్వా జుక్వా వ్యాగుదీర్జోతి ఓం భూస్వః ఓం భువస్వః ఓం శివస్వః ఓం భూర్భువస్వస్వః అవితేనమగ్గుస్తా స్వస్తేనమగ్గుస్తా దేవసవిధ ప్రాసావీః ప్రాణానాగమ్యాం అస్యాం రూతో శ్రీ శ్రీనాసునా వైవాహికమోత్సకర్మాంగమోపాసనాగ్నో ఆధారాంతే శ్రోలోపే మంత్రలోపే క్రియాలోపే నియమలోపే శ్రద్ధాలోపే కాల విపర్యాసే కర్మ విపర్యాసే చౌదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవవిష్ణుర్ఘోష్యే అతిర్మున్యస్వ స్వస్తిర్మున్యస్వ దేవసవిత ప్రసువ ఓం అతో దేవ అవంతనత విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యాసప్రదా విస్వః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానుదే పదం సమోఢమస్య వాకం సురే స్వః త్రీణి వదాచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః ధర్మానుధారయన్ స్వః విష్ణు కర్మాణి పశ్యదగతో అవదాని పస్పసే ఇంద్రస్య గజ్జస్సగా స్వః తద్విష్ణు పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దియోజక్షరాగతగ్ స్వః తద్విప్రాసో పండవో జాగ్రవాగం వసమిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వః ఓం భూస్వః ఓం భవస్వః ఓం శివస్వః ఓం భూర్భువస్వస్వః అవితేనమగ్గుస్తాదేవసవిధ ప్రాసావీః మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ
ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తేజో వాయురాకారమదహంకారం వ్యక్తావ్యక్తసప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాయమానస్య పణిరాసస్య సహస్రపణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతే శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతీ తేజోవతి సంయమనీ రక్షోమతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతి వరుణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవనే క్షుసురాధిపతిదీక్షితోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుసకృంజసకసాల్మలీ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీరావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకర్ణక గురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకవస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్ర మధ్యరేఖాగా ప్రదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏ దక్షిణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధకేషు జగసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమసిదక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతపసంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య శ్రీహరలోకే నివాసిద్యర్థం దిగునీకృత అగ్నిష్టోమతిరాత్రాప్తోర్యామ సాంతవన వాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాది యదకృతో పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ వికనో మునీంద్రమతానుసారిభిః ఋగ్వేదర్మన్వదిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిరుక్త గృహ్యధర్మశాస్త్ర పురాణ ప్రవాద కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ అంధక శారంగాది దేవపంచాయోధరస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైకార్తభవచ్ఛాస్త్రోక్తమార్గేణ ఆంగేర్స భారగస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాస గోత్రోద్భవస్య పంచవ్యూహవిభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతత్వ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతారస్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నత్రే ఆంగేర్స భారగస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాస గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తిస్థలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగేర్స భారగస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాస గోత్రోద్భవస్య సమస్తదేవతా నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చవద ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగేస భారగస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాస గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ
ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾಗ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತವಕ್ಷಸ್ಕಾಗ ದಿವ್ಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಗ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಗ ದಿವ್ಯ ಮಾಲ್ಯಾಶೋಭಿತಾಗ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಗ ನಿಜಾವತಾರಾಗ ಸ್ವರ್ಣ ಗರುಡ ವಾಹನಾರೂಢಾಗ ಅಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮತ ನಿತ್ಯಯೌವನ ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಗ ಸಕಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಗಿನೋ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ಗೋತ್ರಾಗ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸೌ ಜಾತಾಗ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಗ ಭಾರ್ಗವಚ್ಯವನ ಆಪ್ನವಾನ और विदल पंचाशय प्रवरान्वित भार्गव सगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातुनां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीं आनन्दगुणात्मकां मूलप्रकृतिरूपां उत्तरवृणनक्षत्रे कन्यारासौ जातां प्रभोः संकल्पतनकां श्रीदेवी नाम्निमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि काश्यपावत्सारणैद्रवत्रगाविषय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकलसुरांगना संसेवितपादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौन्दर्यवतीं बहोश्यामलांगी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पधनकां भूदेवी नाम्निमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यां श्वेतव्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां स्वलंकृतां सात्वीं श्रीराजमेधसे जगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामाप्तिसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातकमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्समुहूर्तोऽस्तु தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. அடுத்து திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற உபச்சாரங்களை செய்து எம்பெருமானின் திருவடிகளில் வைத்து மானசீகமாக பூஜைகள் செய்வார். நாமும் சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். பக்தர்களே, நாளை தை அமாவாசை. எல்லா மாதங்களிலும் அமாவாசை பருவ தினம் வந்தாலும் தை மாதத்தில் வரும் தை அமாவாசை மிகவும் விசேஷமாக கருதப்படுகிறது. இந்த புண்ணிய தினத்தில் தங்கள் மூதாதையர்களுக்கும் பித்தர்களுக்கும் திதி கொடுப்பது, தர்ப்பணம் செய்வது எல்லா பிரிவினருக்கும் வழக்கம்தான். சமுத்திரத்தில் நீராடி தர்ப்பணம் செய்வது சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது. முடியாவிட்டால் நதி, ஆறு, குளம் போன்றவற்றில் நீராவிட்டு வந்து கூட செய்யலாம். இப்படி செய்வதன் மூலம் அவரது குடும்பமும் வாரிசுகளும் நலமாக இருப்பார்கள் என்று ஒரு நம்பிக்கை. இத்துடன் இன்னொன்றும் செய்ய வேண்டும். அன்று பக்தர்கள் திருவள்ளூர் திவ்ய சேத்திரத்துக்கு சென்று அங்கு எழுந்தருளி இருக்கும் வைத்திய வீரராக பெருமாளை வழிபடுவது அவர்களுடைய குடும்ப ஆரோக்கியத்துக்கு மிகவும் நல்லது. முன்னோர் தூது வானரத்தின் வாயில் மொழிந்து அரக்கன் மன்னூர் தன்னை வாளினால் மாள முனிந்து அவனே பின்னோர் தூதனாகி மன்னருக்காகி பெருநிலத்தார் இன்னார் தூதன் என நின்றான் இவ்வெவ்வுள் கிடந்தானே என்பது திருமங்கையாழ்வார் பாசுரம். இந்த ஒரே பாசுரத்தில் எம்பெருமான் இந்த பூலோகத்தில் சாதுக்களை ரட்சிக்க, துஷ்டர்களை சம்ஹரிக்க, தர்மத்தை நிலைநாட்ட எடுத்த பூரணமான அவதாரங்களான ராமாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம் ரெண்டையுமே போற்றுகிறார். ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் பிரார்த்தியான தேவியை தேட ஆஞ்சநேயரை தூது அனுப்பிய அந்த ஸ்ரீராமனே பின்பு துவாபர யுகத்தில் மகாபாரதத்தில் தன்னுடைய ஆப்தர்களான பாண்டவர்களுக்காக கௌரவர்களிடம் தானே தூது சென்றாராம். அவனே பாண்டவ தூதன், அடியவர்களுக்கு இனியவன், தேவர்களின் தலைவன். இதோ இந்த திருவள்ளூரில் ஸ்ரீ வீரராக பெருமாளாக சயன கோலத்தில் இருக்கிறார். அவரை தொழுதால் நமது மனசுக்கு சாந்தி கிடைப்பதோடு தீராத நோயும் தீரும் என்கிறார் ஆழ்வார். ஆகவேதான் இவர் வைத்திய வீரராகவர் என்று போற்றப்படுகிறார். இந்த திவ்ய சேத்திரத்தில் தவமிருந்த சாலிகோத்திர முனிவருக்கு தரிசனம் தந்த எம்பெருமான் ஒரு முதியவர் ரூபத்தில் வந்து தான் ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் என்றும் அதற்கான இடத்தை காட்ட வேண்டும் என்று கேட்டபோது, அதாவது எவ்வுள் என்று வினவியதாகவும் அவர் காட்டிய இடத்திலேயே அச்சாரூபியாக கிடந்த கோலத்தில் சயனித்து விட்டாராம் பெருமாள். ஆகவேதான் இந்த சேத்திரம்
திரு எவ்வுள் என்று அழைக்கப்பட்டு பின்னாளில் திருவள்ளூர் ஆகிவிட்டதாம். தை அமாவாசை என்று இங்கு பக்தர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வருகிறார்கள். இங்குள்ள புஷ்கரணியில் நீராடி அந்த ஸ்ரீ வீரராக பெருமாளை தரிசித்தால் எல்லா நோய்களும் தீரும் என்று நம்பிக்கை. பக்தர்களே, வெகு நாட்களாக கரையாமல் இருக்கும் பெரிய பெரிய கட்டிகள் கூட இங்கே உள்ள குளத்தில் எம்பெருமானை வேண்டிக் கொண்டு வெள்ளத்தை கரைத்தால் அது வேரோடு களையுமாம். இந்த நம்பிக்கை இருப்பதால் தான் இந்த திருக்கோவிலின் வாயிலில் இருக்கும் கடைகளில் வெள்ளம் விற்று கொண்டிருப்பதை கூட நாம் காண முடிகிறது. இப்போது அரசாங்கம் வெள்ளத்தை குளத்தில் கரைக்க தடை விதித்திருந்தாலும் பக்தர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் தெரியுமா? தங்கள் பிரார்த்தனையை விடுவதாக இல்லை, கரைக்க முடியாவிட்டால் கூட வெள்ளத்தை வாங்கி பெருமாளுக்கு நிவேதனமாக கொடுத்து விடுகிறார்கள். அந்த அளவிற்கு இந்த வைத்திய வீரராக பெருமாளிடம் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை. அதற்கேற்றாற் போல அவர்களது நம்பிக்கையும் வீணாவதில்லை. பக்திக்கு அடிப்படையே நம்பிக்கைதானே. தை அமாவாசை என்று இவரை தரிசிக்க வரும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் நமக்கு இதை நிரூபிக்கிறார்களே. எல்லாவற்றையும் விட இன்னொரு விசேஷம் என்னவென்றால், இந்த நவீன காலத்துக்கு தகுந்தாற் போல இந்த வைத்திய வீரராக பெருமாளின் திருமேனியை வைத்தியர்கள் நோயாளிகளை பரிசோதிக்க வைத்திருக்கும் ஸ்டெதஸ்கோப் என்கிற கருவி கூட அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் பார்த்து கொள்கிறேன். பக்தர்களே, இவரை தெய்வ வைத்தியராக நம்புவது சரிதானே? அதிலும் தை அமாவாசை பருவ தினத்தில் திருவள்ளூர் சென்று ஸ்ரீ வைத்திய வீரராக பெருமாளை தரிசித்து அந்த நோய்களிலிருந்தாம் விடுபட்டு நாம் நீண்ட ஆயுளை பெறலாம். பக்தர்களே, அதற்கு ஒரு சிறிதும் சளைத்தவரல்ல நமது திருமலையான். இவரை வந்து தரிசித்தாலும் நமது அத்தனை நோய்களும் நீங்கும். வேண்டிய வரம் தரும் அந்த வெங்கடேசனின் திருக்கல்யாணத்தில் இதோ இப்போது திருமாங்கல்ய தாரணம். பிரார்த்திமார்கள் இருவருக்கும் எம்பெருமானின் சார்பாக திருக்கல்யாண மந்திரங்களை சொல்லி இதோ சமர்ப்பிக்க தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சக சுவாமி. முதலில் ஷீராப்தி கன்னிகையான பார்க்கடல் உதித்த அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமி பிராட்டிக்கு ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு மாங்கல்ய தாரணம் கரோமி. प्रजापतिस्त्वमगं राजानमसृजतां मन्त्रकामेदान्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु. கல்யாண வேதிகா வெலயுனி கல்யாண வேதிகா మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసినతడు.
కుండములను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండామోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి యౌవనపు యాగము చేసినతడు కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారనే పొగనిందగా కదిసి నేనెన్నడిమి రాజానాభవంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ వాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తోభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ శుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వః ఓం భువస్వః ఓం శివస్వః ఓం భూర్భువస్వస్వః అవితేనమగ్గుస్తాదేనమగ్గుస్తాదోస్తేనమగ్గుస్తా దేవసవితప్రాసావీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం భూతో శ్రీ శ్రీనివాసవరః వైవాహమహోత్సకర్మాంగమోపాసనాగ్నో హోమాంతే స్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో విష్ణుదర్ఘోష్యే ఉదరమున్యస్వ స్వస్తిరమున్యస్వ దేవసవితప్రసుమాన్ వాం మతో దేవా అవంతనగతో విష్ణువిచక్రమే పృథివ్యాచృతా విస్మః కృతం విష్ణువిచక్రమే త్రేధానదే పదం సమో నమస్యమాగం సరే స్వః త్రీణి పదాచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః పుధర్మానిధారగన్ స్వః విష్ణో కర్మాణి పశ్యతి గతో అవదాని పశ్పసే ఇంద్రస్య గచ్చస్సగా స్వః తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరగः ద్విజక్షరావదగ్గ స్వః తద్యప్రాసో పండవోజాగ్రవాకం పశ్యవిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వః ఓం భూస్వః ఓం భువస్వః ఓం శివస్వః ఓం భూర్భువస్వస్వః అవతేనమగ్గుస్తాదేనమగ్గుస్తాదోస్తేనమగ్గుస్తా దేవసవితప్రాసావీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం భూతో శ్రీ శ్రీనివాసవరః వైవాహమహోత్సకర్మాంగమోపాసనాగ్నో కవసాద్గుణ్యాదృష్టాంతోమం కరిష్యే అవితరమున్యస్వ స్వస్తిరమున్యస్వ దేవసవితప్రసువాన్ ఓం యుధస్య కర్మణో త్రిచం విద్వాని మహాకలం అగ్నగే స్వః అగ్నగేన్నాదాగ స్వః అగ్నగేన్నపతగే స్వః ప్రజాపతగే స్వః ఇంద్రాగ స్వః విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వః సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వః సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం
त्रिदोष्मै स्वाहा अग्नये स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदगे स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा बोधनिस्तुतरः जदवेद उचर्षणि स्वाहा पुनर्शिक्षणात् पुनरन्दरो बृहस्पतिः पुनर्मे असुरां शिक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वृजनष्टेभ्य स्वाहा विहितं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रथ्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येदो औषधिमगे स्वाहा शब्दसीते दोषिते डोमयिते स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाक स्वाहा सूर्यमे पाक स्वाहा सोमचित्तमे पाक स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणन्मे पाक स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमे पाक स्वाहा अग्निर्भुक्तग स्वाहा वैदर्भुक्तग स्वाहा योर्भुक्तग स्वाहा पृथ्वीभुक्तग स्वाहा अग्निर्जेन्नग स्वाहा वैदर्जेन्नग स्वाहा द्योर्जेन्नग स्वाहा पृथिवीजेन्नग स्वाहा ओम सप्तदे अग्ने जमिदः सप्त जग्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सुधात्मा गतन्ते सप्तगौनीराप्रणस्व नरेण स्वाहा सुधाविद्वाननुष्टप्रतेन पूर्णमावदञ्जभाय मनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रागजभो स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो ध्योस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् गन्धर्वाब्जस्य तृप्यन्ताम् अरितेरमग्गस्तादेवसविदप्रासादि दक्षिणोत्तरतावायतान् देवताभ्यो नमः विनाशकं यथास्तवदुष्टाभ्यां सुमनात्तं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रं मे भूयाः पूर्णवश पूर्णं मे भूयात् सुसं मे भूयात् सर्वं मे भूयात् अक्षतमक्षित्येजोमि अक्षता मे चेष्टाः प्राच्यां दक्षिणागां मरीच्यां प्रतीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां माब्जगन्ताम् पश्चिमतः परद्युपनगाम् दक्षिणतः परिदुपनगाम् उत्तरतः परिदुपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सुतनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुतनमसि उत्तरतो विष्णोः सुतनमसि प्राच्यां विष्णोः सुतनमसि सर्वान् प्रथमोक्याग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यागन्तान् विदुजुहोति आप्यागन्तामापवोषधयोऽमृतां प्रसदगच्छिदं गच्छतो न दृष्टिमेरग स्वाहा सुद्यन्तां दिवसनकं सुद्यन्तां दिवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगोर्भूतिः भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रगायसं जवदग्ने कश्यपस्य प्रगायसं यद्देवानां प्रगायसं तन्मे अस्तु प्रगायसं दीर्घायुत्सागा बलागा दतागा तदञ्चवर्तसे प्रगायसम् आपोकृष्टामगाभुवस्तानवोद्येदसातना आपो जनगता जनः यत्ते यज्ञे तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते यत्ते यज्ञे हरस्ते नाहं हरस्यै भूयासं मयमेदां मयि प्रजां मयज्ञस्ते ददातु मयि मेदां मयि प्रजां मयीन्द्रियन्द्रियं ददातु मयि मेदां मयि प्रजां मयि सूर्यो राजो ददातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं पुदासुनां पूर्णतोस्तेष्टानि वै स्मरणं परं राजेण वाचा मध्येन्द्रियबुद्ध्यात्मना वा प्रदेशोवात् सर्वं नारायणाय समर्पयामि रमेण महासोमाग्रमः पुनःपाद्यं पुनरज्ञं प्रदातुणीयं समर्पयामि यदासकं यदास्तवृष्टापयामि सुमनागमनागच्छाम् अग्नये नमः गृहोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ
तत्स ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्री उगनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் லாஜகோமம், அதைத் தொடர்ந்து பூர்ணாகுதி, பின்பு அஞ்சனமிடுதல் என்கிற நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். கண்ணாலம் கோடித்து கன்னிதன்னை கைப்பிடிப்பான், திண்ணார்ந்திருந்த சிசுபாலன் தேசழிந்து அண்ணாந்திருக்கவே ஆங்கவளை கைப்பிடித்த பெண்ணாளன் பேணும் ஊர் பேரும் அரங்கமே என நாச்சியார் திருமொழியில் ஆண்டாள் பிராட்டி எம்பெருமானையே மணாளனாக அடையும் தன் வேட்கையை சொன்னாள். அந்த கண்ணனுக்கே தனக்கு நடக்கவிருக்கும் அந்த திருக்கல்யாணத்தை கனவிலே கண்ட அவள் அதை தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் 10 பாசுரங்கள். அதை இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் வேளையில் பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பக்தர்களே, இந்த வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை பாராயணம் செய்த கன்னிப் பெண்களுக்கு நல்ல கணவன்மார்களும் தம்பதிகளுக்கு நல்ல புத்திர பாக்கியமும் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். நாம் செய்யும் செயல் நமது உடலை திருப்திப்படுத்தினால் அது விருத்தி. அதே செயலை சாஸ்திரப்படி பண்ணினால் அது கர்மா. அதே கர்மா சமூகத்துக்கு பயன்படுமானால் அது தர்மம். ஆனால் அதே செயல் எம்பெருமானுக்கு பண்ணினால் அது கைங்கரியம். இதுதான் எல்லாவற்றையும் உயர்வானது. சொல் ஒன்றுதான், ஆனால் அது செய்யப்படும் விதத்தை வைத்து அதன் மகிமை அதிகமாகிறது. நாம் எப்படி எம்பெருமானை தரிசித்தோமானால் அந்த உணவு நமக்கு பிரசாதம். அவருக்காக நாம் பட்டினி இருந்தால் அது விரதம். அந்த தண்ணீரை நாம் அருந்துவோமானால் அது தீர்த்தம். அவரை பாடுவோமானால் அது கீர்த்தனம். அது மட்டுமல்ல, அவருக்கு இப்போது நான் சொன்னது போல சேவை செய்தால் அது கைங்கரியம். இதோ இப்போது அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருப்பதும் அது போன்ற ஒரு கைங்கரியமே. அந்த எம்பெருமானுக்காக நாம் செய்யும் பயணம் யாத்திரை. அவர் நம்முடைய மனமே கோவில். ஆக மொத்தத்தில் எம்பெருமானிடம் நாம் சம்பந்தம் கொண்டோமானால் மனிதனே பக்தனாகிறான். பக்தர்களே, அதே போல் தன்னுடைய பக்தியால் எம்பெருமானை கவர்ந்த அந்த ஆண்டாள் பிராட்டிக்கும் எம்பெருமானின் திருத்தோள்களில் சமர்ப்பித்த மாலை இப்போது சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடி, பாடிக் கொடுத்த பைங்கிளி எம்பெருமானோடையே ஐக்கியமானாள் அல்லவா? இத்துடன் மாலா பரிவர்த்தன நிகழ்வு இனிமையாக முடிந்தது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு இப்போது வரவுள்ளோம். பக்தர்களே, தேவியர் இருவரையும் தங்கள் நாயகனான மலையப்ப சுவாமிக்கு அருகே இப்ப கொண்டு வந்து சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை நாம் பெற உள்ளோம். இதன் பின்பு அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை ஆனதும் அக்ஷதாரோபணம் என்கிற கைங்கரியம் நடைபெறும். இதை தலம்புராலு என்பார்கள். அதாவது மங்கள அட்சதையை தம்பதிகளின் சிரசில் சேர்ப்பது. சாதாரணமாக கல்யாணம் முடிந்ததும் அட்சதை சேர்ப்பது வழக்கம்தானே. நம்முடைய எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அத்தனையும் நமது திருமணங்களில் நடைபெறுவது போலவே நடைபெறுகிறது. முடிவாக மங்களஹாரத்தியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவுக்கு வரும். பக்தர்களே, இந்த வைபவத்தை கண்டுகளித்த நம் அனைவருக்கும் திருவேங்கடமுடையானின் திருவருள் கிடைக்க பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరిన विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ ఓ